ballistics. So, what is internal ballistics? What physically occurs inside the gun barrel once a projectile is fired? So, I am explaining to you with the expression of pistol. This is a small gun. You can imagine that a pistol is in my hand, and because the AK-47, a shotgun or rifles, SLR, etc., so-called AK-56, the barrel of that gun, these guns, is very big in length. Okay, so you can imagine the expression. I am expressing that a pistol, a small gun, is in my hand. Okay, inside the gun barrel, once a projectile is fired, it turned as internal ballistics. In detail, you can call it internal ballistics, the study of what physically occurs inside the gun barrel is internal ballistics. The external ballistics, what it is, what physically happens to the projectile once it leaves the barrel. जब बुलेट फायरिंग के बाद ट्रिगर प्रेस करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण वो एक न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है फायरिंग में ट्रिगर प्रेस के बाद जो भी उसका प्रोसेस है ब्रीचिंग कॉकिंग लॉकिंग एंड फायरिंग पिन जो परकशन कैप पे हैम्पर किया प्राइमरी मिक्सचर इग्नाइट किया और एनविल से वो आगे की तरफ गन पाउडर को इग्नाइट किया उसको प्रेशर जो है ना वो क्रिएट किया और ये टोटल जो है ना इंटरनल बैलिस्टिक्स में आ जाएगा क्योंकि ये बैरल के अंदर